Hello guys, welcome to Coders Point. Today in our daily LeetCode challenge we have unique length 3 palindromic subsequences. So let's see what exactly question is. Given a string is, return the number of unique palindromes of length 3 that are a subsequence of S. Note that even if there are multiple ways to obtain the same subsequence, it is still only counted once. A palindrome is a string that needs the same forwards and backwards. A subsequence of a string is a new string generated from the original string with some character. Can be one deleted without changing the relative order of the remaining characters. And for example, we can see that there is a subsequence which is ACE, which is the subsequence of ABCDE. So guys, what exactly question is, in this question we have a string और उस स्ट्रिंग में से हमें लेंथ 3 के पैलिंड्रोमिक यूनिक सब्सिक्वेंसेस को फिगर आउट करना है एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिटर्न द काउंट कि हमारे पास कितने सब्सिक्वेंसेस थे. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व देम. सो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोना कंसीडर अवर फर्स्ट एग्जांपल दैट इज ए बी सी ए. ओके, सो एज फॉर द एग्जांपल वी हैव ए बी सी ए एंड इसके अंदर से अगर हम सब सीक्वेंसेस को फिगर आउट करते हैं, सो व्हाट आर द सब सीक्वेंसेस वी हैव. फर्स्ट सब सीक्वेंस वी हैव इज ए सेकेंड सब सीक्वेंस वी हैव इज ए बी ए, थर्ड इज ए सी ए. So these are the three, and after that we have so these are the subsequences we have here. So इनका count हमारे पास है 3 and that is how we have to figure out कि हमारे पास कितने unique subsequences बन रहे हैं जो कि palindrome है in nature. and what exactly palindrome is, so हम इसको reverse करके, जैसे a को अगर हम reverse करके भी देखते हैं तो still it will remain a. same is for ABA. अगर आप इसको return भी करोगे so that will still ABA. सेम इज फॉर ACA. अगर आप इसको रिवर्स भी करोगे स्टिल यू हैव ACA. सो दैट इज व्हाट वी कॉल पैलिंड्रोम एंड हमारे पास यहाँ पर 3 पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंसेस अवेलेबल हैं. सो लेट्स सी गाइज व्हाट इज द एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस थिंग. सो दिस क्वेश्चन इज गोना बी वेरी इजी. व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उनके लिए फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस कैलकुलेट करेंगे. सो अवर फर्स्ट स्टेप, ओके लेट मी राइट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच व्हाट वी आर गोना डू इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग वी विल डू इज find first and last occurrence of all characters between A to Z. This is the one thing. So after figuring out the occurrence we will check कि जो हमारा फर्स्ट अकरेंस है दैट शुड बी लेस देन दी लास्ट अकरेंस. अगर ये कंडीशन मैच होती है देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो द नेक्स्ट स्टेप हेयर, द सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू चेक दैट लेफ्ट अकरेंस विच इज एक्चुअली द फर्स्ट अकरेंस दैट नीड्स टू बी लेस देन राइट अकरेंस विच इज द लास्ट अकरेंस. if this condition is getting fulfilled then we move to the next step, otherwise we will move to the next character. and then last step is अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है then we will look all the characters which are in between this left and right occurrence and we will put them one by one in our subsequences to get the palindromic substring. So it is like अगर हमारे पास, okay let me just complete it first then I will show you through an example. So add distinct characters as middle character. तो हम हमारे एग्जाम्पल को ही कंसिडर करते हैं. सो एग्जाम्पल इज दैट AABCA. अब AABCA में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द A इज 0 एंड लास्ट अकरेंस ऑफ A इज 4. सो अब 0 से 4 के बीच में वी हैव दिस ABC 3 कैरेक्टर्स. सो व्हाट वी विल डू, लाइक फर्स्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस एंड हमने इस 3 कैरेक्टर्स के सेट में से एक कैरेक्टर उठा लिया विच इज A. तो ये हो गई हमारी पहली सबसीक्वेंस. अगेन फर्स्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस, नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव B. ये हो गई हमारी दूसरी सबसीक्वेंस. इन द सेम वे अगेन फर्स्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस एंड तीसरा कैरेक्टर हमने उठा लिया C एंड ये हो गई हमारी 3 सबसीक्वेंसेस. लाइक दैट हम बाकी स्ट्रिंग्स के साथ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. वी हैव टू फिगर आउट फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस एंड देन आफ्टर
उनके बीच में जितने भी करेक्टर्स हमारे पास आते हैं उन सबको हम एक एक करके अपने सीक्वेंस में सेटअप करते जाएंगे एंड वी गेट द टोटल काउंट. दैट इज हाउ वी आर गोना सॉल्व दिस. सो नाउ लेट्स राइट द लॉजिक एंड लेट्स सी how it is working. Okay, so here we have a string as usual. What we have to do, by default हम result को 0 कर देंगे. Result का count हमारे पास by default 0 है. So let me just write here 0. After that, next thing I will do is I will write a for loop. As for the for loop for character, ch is the character, I am writing here set, and the set is for s. Now why I'm writing this set? So that all the repetitive characters will get removed from the string, and then I am gonna calculate left and right index. So to calculate the left and right index, I will write here left is equals to s dot find. S is our string and s dot find, and what we are gonna find here, we are gonna find the character which we are getting from the loop. So हमने उसके लिए लेफ्ट इंडेक्स फाइंड कर लिया which is actually first occurrence, and then we are gonna find the last occurrence. For that we will write here right is equals to s dot find, and again we will do the same thing, we will pass here character. So like this we are gonna find first and last occurrence. Okay, one thing you guys have to add here is that by using just find you will get the first occurrence, but if you want to find the last occurrence then you have to add here rfind, which is finding from the rightmost side. So you will get the last occurrence, and like this is how you get the first and last occurrence. After getting first and last occurrence, what is the next step you guys will do is you will check कि जो हमारा left occurrence है, which is actually first occurrence, that needs to be less than right occurrence. If this condition is meeting, then we move to the next step, and in that next step what we will do, we will use concept of string slicing, and we will figure out all the middle characters which we have in between left and right. So for that we will write here middle is equals to, again we are gonna use set, and then we are gonna say okay, from the string take left plus 1 as starting range to right, and this will give us all the middle characters. And further what we will do, we will just calculate the length of middle characters, and that is gonna be result is plus equals to length of middle characters. So what we are doing here, हमने slice करके middle string figure out कर ली, जितने भी हमारे पास middle में characters है we will figure out by using the string slicing, and further हमने उनकी length को calculate किया, whatever their length is we are adding it into the result, and actually this length is gonna be the total number of subsequences which we have. So now here we can directly return this result, and now if I run this, let's see. Okay, I'm running it. Okay, we got an error. Let's see what exactly the error is. It is saying invalid syntax for ch in the set length5 solution.py. Let's see what is the problem. Oh yeah, so instead of is we have to write here in. Okay, let's write it again. Perfect. So तीनों cases execute हो गए हैं without any error. Now let's submit it. So this is how we can solve this question. I hope you guys like the video. Now we will meet tomorrow with a new question. Thank you.